So very good evening class. Today is the class of MCQ class number 27 of the UGC NEET paper 2 Mass Communication Journalism. So here we have reached to the questions number that is 219, and it is very much important question, that is conceptual based question from the advertisement. So segmentation identified by the appeal of the product to their personal interests are known as. Read it twice the question, you will understand better that what it is asking, right? So this is asking that the segmentation identified by the appeal of the product to their personal interests are known as what? Benefit segmentation, B, target segmentation, C, reach segmentation, D, access segmentation. Everybody answer. It is very much no, it's not the target segmentation. It will not be. B will not be the answer. So read it twice the questions. You will get it. Segmentation identified by the appeal of the product to their personal interests are known as benefit segmentation. You have to understand that what is benefit segmentation first, then you will understand automatically. Okay. So benefit segmentation क्या होता है? Benefit segmentation is the categorization of your target audience. एक target audience का ऐसा category which is based on the value they will receive from your product or the service. Like the example I have given here or the mentioned here, that some consumers want phones, right? Some consumers want phones with a good cameras. Some want phones with a status symbol like Apple का उन्हें phone चाहिए, iPhone का phone चाहिए. Some may simply wants phones that satisfy the core function of a mobile, right? So everybody have its own desire, everybody have its own need, right? So सभी का individual needs है. कोई लोग अच्छा कैमरा चाहते हैं, कोई लोग अच्छा स्टेटस सिंबल चाहते हैं, कोई लोग अच्छा अपनी कोर फंक्शन हो, या फिर कुछ लोग अपनी परफॉर्मेंस बेटर या रैम बेटर चाहते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट दैट द गुड, इट इज व्हाट द बेनिफिट सेगमेंटेशन, जिसको जिस तरीके से बेनिफिट हो, राइट? दिस इज द दैट टारगेट ऑडियंस कैटेगराइजेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ द बेनिफिट सेगमेंटेशन, जिसको जिस तरीके से बेनिफिट मिले वो ऐसा बेनिफिट सेगमेंटेशन. सो दिस इज व्हाट हियर इट इज आस्किंग, that segmentation identified by the appeal of the product to their personal interest. Personal interest का मतलब personal benefit, right? The personal interest, it means that I like mobile phones that which having the good cameras, right? You like the phones like which having the good RAM or the good performance, right? So this is what the personal interest or the personal benefit, this is what appeal of the product to their personal interest. So segmentation identified, that is benefit segmentation. Here it is, that is the categorizations of the target audience which based on the values they will receive from your product or the service. Value के ऊपर ये है, right? This is based on the values. Okay, it is all clear? This question is clear to everybody? Very जल्दी से बताएंगे. Is there any doubt in this question or should I repeat it again? Okay, very good, all clear means. चलिए 220, the highest number of internet users per 100 inhabitants in the world are in. This is the 2015 questions, right? 2015 का questions है. Data has been changed, data change हो गया. So 2015 के अनुसार ये questions है. So the highest number of internet users per 100 inhabitants in the world in. So Sweden, the United States, Japan or Iceland. Everybody. No, it's not the Japan. Japan नहीं है. Everybody answered it. This is the question, very much important question which was asked in the 2015 September. Very good. That's the D answer, right? Who have answered D? D किसने आंसर किया था? अभिलाषा and Vanika has answered. Very good. चलिए. So the highest number of internet users per 100 inhabitants in the world are Iceland. Okay, so Iceland has the largest percentage of its population using the internet of any country in the world, according to the figures from the World Economic Forum Global Information Technology Report 2015. ये right? ये 2015 का report है, WEFGIT. Okay, World Economic Forum Global Information Technology Report, right? So this is what
2015 के अनुसार आइसलैंड दैट हैज द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशंस यूजिंग द इंटरनेट ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द फिगर्स फ्रॉम WEFGITR, राइट? सो दैट इज व्हाट, अगर 2022 दैट लेटेस्ट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दैट इज कि सबसे लोएस्ट जो है कंडीशन विच इज डिसकनेक्टेड पीपल, राइट? The highest number of disconnected people in the country has, that is India. Okay, 50% disconnected. It is 50% it is disconnected, not using the internet, not associated with the internet, and USA in the 15%. 15% USA के अंदर है और इंडिया के अंदर 50% है which is not associated or the disconnected, right, people. So despite having the second largest online market in the world, right, इसके बावजूद जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड है, राइट? सेकंड लार्जेस्ट, अद्भुत, विचित्र, राइट? सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड ड्यू टू द populations, different characteristics of the populations are. So this is what the highest number of internet users per 100 inhabitants जो है वो आइसलैंड का है. Okay, it is all clear. The main objective of public relation is to, everybody, the main objective of public relation is to increase the sale of manufactured goods. B, enhance the image of organization in the public domain. Make internal politics public. C, keep the channels of a grapevine open. Yes, what is public relation and what is the objective of public relation? You all are familiar with this term because we read in the chapters classes, right? Okay, so that right answer it is, that is enhance the image of organization in the public domain. This is the main motive or the aim of public relations, right? So public relation is the strategic communication process that builds mutually beneficial relationship between organization and its public. So goal of public relation is to create, maintain and protect the company's reputations, enhance the prestige and present a favorable image. Okay, mainly it builds the image of an organization in the public domain. This is what at the objective of public relations. Okay, chaliye next question number 222, that is 222. Image advertising that change the experience of buying and using a product is identified as. Please read it twice. It is very much important question. Image advertising that change the experience of buying and using a product is defined as what? Options are ideal advertising, B, transformation advertising, C, experience advertising, D, trade advertising. Everybody answer. That changes the advertisement that changes the experience of buying and using a product is identified. आपकी बाइंग एक्सपीरियंस को चेंज करता है और प्रोडक्ट के यूज का भी चेंज करता है. जल्दी से बताएंगे दैट इज व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग इट इज. यस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग. वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग. सो सी, transformation advertising as defined by the American Marketing Association that associate product uses with certain feelings, images or the meanings that transform the experience of using the product. Okay, in simple terms में समझेंगे तो transformational advertisement is a marketing approach that focus on adding transformational appeal to the marketing and advertising materials. Like for the example देखिए, example 1, a software company sell its product by focusing on how it will make the customers work life easier and more efficient. Okay, कोई भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी अपनी प्रोडक्ट को किस तरीके से सेल करेगा, that how it will make the customers work life easier and more efficient, right? This is what that it connected emotionally आपको
कनेक्ट करेंगे आपके फीलिंग के साथ, राइट? दिस इज व्हाट दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इज that how it appeals. Okay, second example, it is that the advertisement of Johnson and Johnson, that you have seen the advertisement, that company offers products for newborns such as diapers or wipes. The company advertises its product in a way that it connects the feeling of a mother and child to its product. Okay, feeling of a mother and child to its product, that is what the transformation advertisement. Okay, so a kind of the appeal that transform your life, make your life easy, right? More it is efficient, and it connects the feeling of a parents with the child, right? So this is what the transformation advertising. It is all clear? So agar aapse example hum puche, right? If you give the example 3, that what advertisement that you will give the example of transformational advertising that changes or the transform your experience of the using of the product. आपके उस प्रोडक्ट का जो यूज करने का जो एक्सपीरियंस है आपको, दैट हैज ट्रांसफॉर्म. ओके, और साथ ही साथ आपका दैट इज व्हाट इट इज एडेड विथ योर सर्टेन फीलिंग्स और इमेजेस, राइट? सो दिस इज व्हाट दैट एवरीबॉडी जल्दी से बताएंगे. सैनिटाइजर्स, वेरी गुड, ग्रेट एग्जांपल्स, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर एग्जांपल दैट गिवन बाय द रचना. सैनिटाइजर्स एडवर्टीजमेंट. Okay, this is what that transforms your life, right? This is what the experiences that we can, everybody we can share the experiences, right? The entire things has been changed by using the product of the sanitizers. Very good. Chaliye, that here we have mentioned the two, that is software company, and that is second, that is, yes, very good, Prega News ka bhi, very good. That the pregnancy test, very good. ये आपका बहुत ही सुंदर example that given by the Trendrel. This is also a kind of the transformational advertisement examples. Very good. That transform the experiences of the using the product, right? Very good. Next question number 2 to 3. The first research effort on the war propaganda was conducted by. The first research effort on the war propaganda was conducted by Daniel Lerner, B. Eleo Cast, C. Carl Hovland, D. Walter Lippmann. Everybody answer. No, it's not the Walter Lippmann. D option would not be. Yes, everybody answer. Very good. Monica has answered first, which is more accurate, right? Yes. That is C, Carl Hovland. Okay, yes. So the first research effort on the war propaganda was conducted by Carl Hovland. Okay, so Carl Hovland was a psychologist. Okay, write it down. Okay, सब चीजें ये आपको important है, note it down करना है. Psychologist working primarily at the Yale University and for the US Army during the World War II, who studied the attitude change. It is very much important. Okay, बहुत ही ज्यादा important है जो हम second point लिख रहे हैं. Attitude change and persuasion. Okay, he studied the attitude change and persuasions, right? Mainly it is related with the attitude change. अगर आपको एक तरफ कार्ल होवलैंड दिया हुआ है और दूसरी तरफ in the second row, in the second column, if it is given attitude change and persuasion, immediately match with the Carl Hovland. Okay, कार्ल होवलैंड के साथ आपको इमीडिएटली उसी समय आपको मैच करना है, क्योंकि एटीट्यूड चेंज और पर्सुएशन की थ्योरी जो है वो कार्ल होवलैंड ने ही दी है. सो वी विल रिलेट इट, वी विल स्टडी मोर अबाउट इट. सी, he first reported the sleeper effect. Another it is sleeper effect, right? Anybody know about the sleeper effect? क्या होता है, कोई बता सकता है? What is sleeper effect? That given by the Carl Hovland. Given by the Carl Hovland, the sleeper effect. Anybody can give? He first reported a sleeper effect after the studying the effects of the Frank Capra's propaganda film Why We Fight on the Soldiers in the Army. Okay, it is very much important. Why We Fight on Soldiers. Yes, Tendril, very good. Delayed effect of a message.
So why we fight on soldiers in the army? Okay. This was a propaganda film. This was a propaganda film. Okay. Please note it down parallel with me. It is very much important, right? So read it twice here. He first reported the sleeper effect after the studying the effect of the Frank Capra's propaganda film. Why we fight on the soldiers in the army? Why we fight on the soldiers in the army? किसकी प्रोपागेंडा फिल्म थी? ये फ्रैंक कैपरास की थी. ओके, जल्दी से बताएंगे किसकी फिल्म थी? एवरीबॉडी, कैपरास. ओके, फ्रैंक कैपरा की प्रोपागेंडा फिल्म था ये, वाई वी फाइट ऑन द सोल्जर्स इन द आर्मी. और उसी से ये क्या निकला? दैट रिपोर्ट ऑफ द स्लीपर इफेक्ट, राइट? सो दे कैन आस्क यू दैट ओरिजिनेशन ऑफ द स्लीपर इफेक्ट, राइट? वेयर द फर्स्ट रिपोर्टेड द स्लीपर इफेक्ट आफ्टर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ, आपके इसे फ्रैंक कैपरा भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ उस प्रोपेगेंडा फिल्म का भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, राइट? सो फिल्म नेम इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट and Frank Capra is also important, right? Because the sleeper effect theory, it is the originations, right? Originations का यही एक सबसे बड़ा फ्रैंक कैपरा की फिल्म इंपॉर्टेंट थी. ओके, चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया. नेक्स्ट वी विल लर्न दैट व्हाट इज स्लीपर इफेक्ट. स्लीपर इफेक्ट होता क्या है? एज टेंडल हैज सीड हियर, टेंडल ने बताया कि ये डिलेड, right? That is delayed effect of a message. Okay, very important in a line, write it down. So sleeper effect describes a phenomenon in which a message from the sources with originally low credibility cause opinion change over the time. In other words, we can understand the sleeper effect. It is like a sleeper effect occurs when a communication shows no immediate persuasive effects, but after some time the recipients of the communication becomes more favorable towards the positions advocated by the masses. इसका मैं दो उदाहरण आपको दूंगा, ठीक है? Two important examples that I will give to you, right? Everybody knows the Sandeep Maheshwari? I think so. Everybody? Yes. So yes, your favorite it is. चलिए, बहुत ही सुंदर. So कभी कभी क्या होता है कि, राइट, आवर ओपिनियंस इज स्टिल और कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट होता है, ठीक है, फिक्स्ड होता है. बट आफ्टर वॉचिंग सम काइंड ऑफ द मोटिवेशनल वीडियोस, राइट, आफ्टर वॉचिंग सम काइंड ऑफ द मोटिवेशनल वीडियोस स्पेशली ऑफ द संदीप माहेश्वरी, सो दैट आवर ओपिनियन गेट चेंजेस, राइट? हमारा ओपिनियन, हमारी एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हम जाग जाते हैं, राइट? आज दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका नेट का रिजल्ट, सॉरी, नेट का जो डेट आया, राइट? बहुत लोग जो सो रहे होंगे वो जाग गए होंगे, राइट? दैट इज व्हाट कि ओपिनियन हम कर लेंगे, हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, कोई बात नहीं, बट आफ्टर द डेट उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया होगा. दिस इज व्हाट द ओपिनियन और द एटीट्यूड चेंज आफ्टर सम टाइम. कुछ देर के बाद होश आता है कि हमें पढ़ना चाहिए, राइट? डेट आ चुकी है. दिस इज व्हाट अबाउट द स्लीपर इफेक्ट, दैट इज द डिलेड इफेक्ट ऑफ द मैसेज. ओके, अगर हमने आपको पढ़ने के लिए बोला है कि आप शुरू से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया, राइट? और सर्टेन जब एग्जाम सर पे आ गया और आपने क्या किया, फिर आपने वही बात आपने मान ली जो हमने पहले कहा था, राइट? सो ये आप लोगों के साथ होता भी होगा. सो दिस इज व्हाट अबाउट द स्लीपर इफेक्ट. सोने के बाद हम, कुछ दिन सोने के बाद हम जागते हैं. ओके, एवरीबॉडी गॉट अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड. सो दिस इज व्हाट अबाउट the sleeper effect, that after some time the recipient of the communication becomes more favorable towards the position advocated by the messages, right? चलिए next, 2 to 4. The name the author of the book Rise of the Network Society from the following. बिना ऑप्शंस का बताइए. If anybody can answer, yes, very good. क्या बात है, रचना ने आंसर किया.
that yes, Tyndall has also answered. So options are, those who have not answered yet, please take the help of the options. Rupert Murdoch, Steve Jobs, Manuel Castells, Bill Gates. Okay, चलिए आंसर्स तो आ ही गया. सी इज द राइट वन. ओके, सी जो है आपका राइट आंसर है. राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, राइट. द ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट इज नाउ इट इज दैट इज वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट. द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, age of informations. So the rise of network society is the first of three linked investigations of the, that is what is rise of network society जो है वो तीन चीजों से, that is linked investigations of, everybody answer it. First जो है वो that is contemporary global, second that is economic, yes, and the third that is political and social. Okay, very good. So that rise of the network society is the first of three linked investigations of the contemporary global economic, political and social changes. The Castells defines the present social landscape as the information age, that we are living in the age of informations in which human societies perform their activities in a new technological paradigm, and argues that landscape was brought about the revolution of ICT, right? So this is what we are, social media पे हम क्या करते हैं, that is what the social media, it is the example of the network society, right? Virtual society, that is what the network society, it is not the face to face society. Face to face society नहीं है जिस तरह से हमारी इंटरनेट के पहले हुआ करती थी, वो अब नेटवर्क सोसाइटी. और इसी नेटवर्क की राइज को लेकर मैनुअल कैस्टल्स ने बुक लिखा है जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सोशल चेंजेस को लेकर, दैट इज राइज ऑफ द नेटवर्क ड्यू टू द राइज ऑफ नेटवर्क सोसाइटी, दैट व्हाट द ग्लोबल कंटेम्प्रेरी ग्लोबल और द इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल, आपका ये सारी चीजें उन्होंने जिक्र किया इस बुक में. ओके, एंड दिस इज व्हाट that we are living in the age of information, and each and every human that having an account on the social media platforms, okay, and they are performing their activities in the new technological paradigm. Okay, this is very much important about the network society. So whenever this terms it comes, so I directly match with the Manuel Castells. Okay, chaliye next 2 to 5. The images of people are reflected through, images of the people are reflected through neutrality, B, philosophy, C, stereotypes, D, spiral of silence. Everybody जल्दी से आंसर करेंगे. टाइमर हैज बीन स्टार्टेड. Images of the people are reflected through. Very good, that's the great answer. That is C, philosophy. Okay, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ओके, दैट इमेजेस, राइट, हम किसी भी चीज का या किसी भी लोगों का हम जल्दी से अपनी माइंड में इमेज कर लेते. दैट इज व्हाट द इमेजेस ऑफ द पीपल आर रिफ्लेक्टेड थ्रू स्टीरियोटाइप्स, राइट. इजली वी कैन आइडेंटिफाई अ पीपल, राइट, कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या किस रिलीजन के बेसिस पे है. वी कैन इजली आइडेंटिफाई, और दैट इज व्हाट that images of the people that is reflected in our mind because of the stereotypes that we are having. the हमारे पास stereotype का, that is जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से जो चीजें सीखते हैं वही चीजें हमारे दिमाग में बसी हुई है, राइट. दैट इज व्हाट द stereotypical idea of a type of persons or the thing that is fixed general ideas that a lot of people have about it, that may be false in the many cases. वो चीजें आपसे गलत भी हो सकती है. stereotypes is not the always true. Okay, it may be false in many of the cases. So stereotypical association can shape the basic visual processing of the other people, predictably warping how the brain sees a person face. Okay, so at any poor और रिच की भी अच्छे से हमें क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप्स हमने इमेजेस में, सिनेमा में बहुत ऐसे हमने
मिडिल क्लास लोगों का देखा है किस तरीके से वो लोग रहते हैं, हाउ दे मिडिल क्लास लिव एक्चुअली, हाउ रिच पीपल लिव, व्हाट इज देयर स्टैंडर्ड, राइट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द पुअर पीपल, ठीक है, पुअर पीपल कैसे रहते हैं, कैसे एडजस्ट अपनी लाइफ को करते हैं, एवरीथिंग वी हैव सीन, राइट। सो दिस इज व्हाट दैट द स्टीरियोटाइप्स जो हमारे दिमाग में चीजें बनी हुई किसी भी चीज का कि या किसी भी चीज लोगों का, दैट इज व्हाट इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्टीरियोटाइप्स। ओके, इट इज ऑल क्लियर। नेक्स्ट 226 critical theories of communication are considered as, critical theories of communication are considered as conventional, non-traditional, non-cultural and political. Everybody answer it, very much important. Critical theories, just focus on the questions, right, you will get it the answer. क्रिटिकल थ्योरीज बोला गया है, क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं उनकी, राइट, दैट इज वेयर द ह्यूमन लिव इन द सोसाइटी, दैट वी द क्रिटिकल थ्योरीज बेसिकली देयर एम्स इज टू चेंज और क्रिटिक द सोसाइटी, राइट, either to change the society or to critique the society as a whole by finding the underlying assumption in the social life that prevent people from the participating in a true democracy. ठीक है, that is what it prevents the people from participating in a true democracy. This is what the criticisms, right? So that the critical theories basically aim either to change or critique the society. So the critical theories paradigm help us to understand how communication is used to appraise, provides a ways to foster positive social changes. Critical theories paradigm हमें ये भी हमें help करता है कि कैसे communications को use करके, that is what the communication that is used to appraise and also that provides ways to the foster positive the social changes. So this is what in happen with the politically also, ठीक है, यही चीज हमारा पॉलिटिकल भी होता है, एक दूसरे की जाकर लोगों की क्रिटिसाइज करना, ठीक है, और साथ ही साथ सोशल बेटर के लिए काम करना, राइट, सोशल चेंजेस भी चाहिए और क्रिटिसिज्म भी करेंगे, द बोथ दे डू, राइट, दे टॉक फॉर द चेंजिंग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, वो सोसाइटी चेंज होने की बात भी करेंगे, सोसाइटी डेवलपमेंट की बात भी करेंगे और साथ ही साथ सोसाइटी दैट इज द क्रिटिक भी करेंगे. दिस इज व्हाट द क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ द कम्युनिकेशन बेसिकली दैट इज considered as a political. It is all clear? Next 227, the Chanakya Award for excellence in the field of public relation is given by. कौन देता है पब्लिक रिलेशन के फील्ड में चाणक्य अवार्ड, जो कि एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन, इट इज गिवन द चाणक्य अवार्ड, दैट इज INS PRSI CIC PRCI. एवरीबॉडी, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया और द पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कौन देता है चाणक्य अवार्ड गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ पब्लिक रिलेशन? वेरी गुड, दैट्स द डी आंसर. डी आंसर है. ओके, yes, those who have answered PRSI Tendal, it is clear to you? Yes, that is PRCI. Very good. So Public Relation Council of India, that is PRCI, is a non-political or the non-profit organization of the professionals. It has been actively pursuing the spread and popularity of the communication and the public relation in India, that we know, right? So the both work, that PRSI or PRCI, दोनों का motive वही है, right? To what? To actively pursuing the spread of popularity of the communication and the public relation in India. But the award which we are talking about, the Chanakya Award, that is given by the PRCI, that is Public Relation Council of India, that among the most esteemed event that celebrates excellence and innovation in the arena of the corporate communication, and it is conducted to recognize and applaud excellence in the talent and professional standards. So similarly, in the simple sentences, we can conclude it that the Chanakya Award, it is given in the excellence in the field of public relation by the PRCI, that is Public Relation Council of India. Okay, चलिए. So questions आगे भी हैं, but we will stop here. अब समराइजेशन पे बात करते हैं, बिकॉज अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिया है, राइट?
अब न्यूज़पेपर और मैगजीन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड न्यूज़पेपर मैगजीन से जितना क्वेश्चन हो सकता था मैंने आपको कराया। अब जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कम्युनिकेशन क्वेश्चंस प्रोमिनेंट थिंकर्स को लेकर क्वेश्चंस हमें करना है। लाइक यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड हैबरमास को लेकर हमने डिस्कस किया था, आज हमने मैनुअल कैस्टल्स को लेकर डिस्कस किया, राइट। हमने चार्ल्स पीस को लेकर कल डिस्कस किया था। सो दिस इज व्हाट दैट every day we will discuss the some conceptual based question that is totally prominently based on the prominent thinkers और theorist। ओके चलिए, तो समराइजेशन पार्ट में सभी लोग सहभागिता बने, पार्टिसिपेट करें। नंबर 1, एवरीबॉडी, what we have learned today's in today's class? yes, सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ा। कौन सा सेगमेंटेशन था? विच सेगमेंटेशन इट वाज एवरीबॉडी? ट्रांसफॉर्मेशनल सेगमेंटेशन, सॉरी दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल अपील था, राइट। ट्रांसफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग दैट वे आर टॉकिंग अबाउट, राइट। यस, दैट इज बेनिफिट, दैट यस बेनिफिट एडवर्टाइजिंग और द बेनिफिट सेगमेंटेशंस, yes, that is the segmentation of the target audience that totally the valued product, okay, that we have given the example of the mobile phone also। चलिए आगे बताएंगे। transformation advertising, yes, that we had discussed। yes, the largest internet users per 100 inhabitants in the country, that is Iceland, okay। internet users, highest internet users, okay, in the world। very good। objectives of the PR, objectives of the PR that to build the image or the enhance of the image of the organizations, okay। yes, sleeper effect भी हमने डिस्कस किया, the sleeper effect that given by the Carl Hovland, okay, very good, very good। sleeper effect, that is delayed इफेक्ट मैसेज, ओके। यस, फ्रैंक कैपरास को लेकर हमने डिस्कस किया। फ्रैंक कैपरास, यस, फ्रैंक कैपरास की जल्दी से बताएंगे वो कौन सी प्रोपागेंडा फिल्म था? नेम द प्रोपागेंडा फिल्म ऑफ द फ्रैंक कैपरास। यस, दैट इज व्हाई वी फाइट ऑन द सोल्जर्स इन द आर्मी, व्हाई वी फाइट ऑन द सोल्जर्स, यस, वेरी गुड, ऑन द आर्मी। 8 number, yes, Monita has said that rise of the network society that we discussed, rise of network society, okay। yes, 9th we have discussed about the Manuel Castells, yes, the book that written the rise of network society by the Manuel Castells। yes, also we have discussed about stereotypes, that is the image, yes, image of the people that is reflected by the stereotypes, okay, very good। also that we have discussed the critical theory of the communication, right। critical theory of the communication that we have discussed, that is considered as political, ठीक है। political से connection से, always remember that is critical theory of communication, it is considered as political, okay, very good। we have also discussed about the PRCI, that is Public Relation Council of India, that is given by the PRCI in the field of public relation excellence, in the field of public relation, that is चाणक्य अवार्ड, okay, very good। चाणक्य अवार्ड जो है वो PRCI देता है, पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया देता है, ओके, नॉट कंफ्यूज विद द PRSI, ठीक है। काउंसिल, ध्यान रखेंगे इस चीज को लेकर, ओके। चलिए, सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट दैट वी हैड डिस्कस्ड द कॉन्सेप्ट। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट डाउन करना है और पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। रिवाइज करते चलेंगे मेनी ऑफ द टॉपिक्स, लगभग बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर जाएंगे एमसीक्यू क्लासेस से। दैट्स व्हाई आई सी इट कि एमसीक्यू क्लासेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देन चैप्टर्स क्लासेस, सो नेवर मिस द MCQ classes, always attend the MCQ classes। if you miss one classes of the MCQ classes, then you are going to miss many of the topics, okay। बहुत सारे टॉपिक आपके छूट जाएंगे, okay। चलिए, so hope you have liked the classes। thank you to everybody, thank you so much, and please
रिव्यूड ऑन आवर प्ले स्टोर। इफ यू हैव नॉट रिव्यूड, प्लीज जल्दी से आप लोग रिव्यूज कीजिए और मनोबल बढ़ाइए।